Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on Kurukshetra monthly compilation, and I'll be discussing Kurukshetra for the month of August. As you know, Kurukshetra is something which is important for both prelims and mains examination. So we'll be looking into the important aspects of the article that is going to be relevant for the examination purposes. So for the Kurukshetra month of August, the focus of the journal was in the rural industries, and this is something important topic for the mains essay and the prelims examination. So before I start, we'll just look into the preface and the index how we'll be moving in the session. So there are important articles that I'll be discussing with you in detail. The first is livelihood promotions for the women under the DAY NRLM. We'll see the detail about this. Second is the export potential of the rural industries entrepreneurship and infrastructure, a roadmap for the rural industrialization, and agribusiness and rural industries. This is how the entire discussion will go. So let's get started. And before that, if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So starting the session with the first article, that is livelihood promotions for the women under DAY NRLM. We'll see the detail about this. So Deen Dayal Antyodaya Yojana, that is the National Rural Mission, National Rural Livelihood Mission, is one of the self-employment program of the government of India and very important program that has substantially helped to the lower section of the society. Now it seeks to recognize about 10 crore household into the self-help group. SSG की अगर बात करें ऑलमोस्ट 10 करोड़ हाउस होल्ड को सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है एंड लिंक देम टू अ सब्सटैंशियल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ना, बिल्डिंग देयर स्किल एंड मेकिंग देम फिनेंशियल, टेक्निकल and marketing resources at the grassroots level. Definitely, when you are providing a sustainable livelihood to any target group, it will ensure कि वो financially अपने sound हो, strong हो और उनकी security हो, technical opportunities मिले, technical knowledge के साथ वो और चीज़ों को explore कर पाए and even the marketing resources at the ground level. Now focus क्या है इस मिशन की? कुछ important priority areas रखे गए हैं. First is the social mobilization and the promotion of sustainable community institution for the rural people, जो खास करके rural populations हैं, जो rural poors हैं, उनके लिए social mobilization और promotion of sustainable community. Second is the financial inclusion for the poor, which is again very important. As an aspect of financial inclusion, government has also had a prime focus on this. Sustainable livelihood, social inclusion, development and convergence. Now, कुछ important components और sub components की अगर बात करें DAY NRLM की. So first is institution building and capacity building. So by building institution for the poor and capacity building is important through training, which is a vital component of DAY NRLM that enable power to overcome through the excess of जो problems है poverty की उसको overcome किया जा सके with the excess of financial, technical and marketing resources. If you're writing in mains paper, आप ये तीन वर्ड जरूर highlight करें. First is marketing, second is technical and third is marketing resources. Now second important aspect जो मैंने आपको starting में बताया, financial inclusion. जितने भी self help group हैं उनको link किया गया है बैंक अकाउंट से so that they can have access to the financial services, right? And financial services also provided in a remote area to help women belonging to the asset group acting as a BC, that is the banking correspondent साक्षी, right? तो ये BCS जिसको banking correspondent सखी के नाम से जाना जाता है, they will be providing assistance to bank and the common services center. Now interest subvention इसी की पार्ट है financial inclusion की, जहाँ पे self help members are eligible to receive the interest subvention equal to the difference between the borrowing rate at the interest of 7%, which is pretty low. Now the additional interest subvention of 3% will also be available on the prompt repayment of the loan, reducing effect to the 4%. अगर किसने जल्दी पेमेंट की है, एडवांस में पेमेंट की, then the total reducing rate or effective rate will be 4%. So this is again a point that you can take a note of for the prelims examination also. Now livelihood promotions के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं.
सो फर्स्ट इज फॉर द फार्म्स एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड्स की अगर बात करें उसके अंदर कैटेगरीज देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज ली हैं. सो फॉर द फार्म लाइवलीहुड आर प्रमोटेड बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, नेशनल टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट थ्रू महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम एंड स्टेट लेड लाइवलीहुड एनुअल एक्शन प्लान. Now, the non-farm livelihood has been promoted through the sub-schemes. कुछ इंपॉर्टेंट सब स्कीम्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट ने फार्म्स और नॉन फार्म लाइवलीहुड्स में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया. दे हैव वर्कड आउट सो दैट इट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प द पीपल. द फर्स्ट इज महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना. इट वॉज लॉन्च्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर द वुमेन. वुमेन को एम्पावर करने के ख्याल से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में या फिर नेशनल टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर बाय मेकिंग सिंथेटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट and their participation and productivity in agriculture based livelihood, right? And also to build a capacity around the sustainable harvesting and post harvesting technique for the national timber forest products. तो ये कुछ important initiative है जो गवर्नमेंट ने अपने एंड से ली. दूसरी है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम विद सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द स्मॉल बिजनेसेस इन द रूरल एरिया, एंड इट ऑल्सो कॉल फॉर द प्रमोशन ऑफ promoting knowledge about the business feasibility management to access the credit and startup as well as scale of the existing enterprises. Now, तीसरी important scheme है that is Ajivika Gram Yojana. This is a program which provides safe, affordable and community monitored transport program for the rural areas. Now, the vehicles are owned and operated by the members of self-help group, network and operated in the region which are not served for the regular purpose of the transport services, right? So this is how it will be it is actually being operated. Now, National Rural Economic Transformation Project. This is a project that has successfully established DAY NRLM as a proof of concept in 13 high poverty districts. इंडिया में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो हाई पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट्स के आते हैं, उनके अंदर ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट की जाएगी विद द स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस. Now, उसके अलावा जो लास्ट प्रोग्राम है दैट इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. These are established in each district of our country in collaboration with the bank and the state government to provide short-term residential training and long-term holding support to the youth. Right? Some of the RSETIs की अगर बात करें रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, दे हैव अ ऑफ-साइट ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर द यूथ and post-training mechanism to include the interactive web portal, call center, network of businesses, counseling centers, and alumni convention center is also developed. Now, कुछ challenges की अगर बात करें इस प्रोग्राम के implementations में क्या क्या challenges हैं, because if you're writing in mains, you have to also highlight the challenges that is being witnessed, right? So the mission require a trained human resources to build the capacity for poor women taking various activities at their level. Now, due to delay in the disbursement of the fund, state treasury or state rural livelihood mission के account है, various desired activities were adversely affected because financials is very important in this program. Now, frequent transfer of state rural livelihood mission directors has also adversely impacted the overall functioning and the progress of this mission. और अगर बात करें रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की RSETIs की, so they may consider itself an another cogwheel. It should be identifying the beneficiaries due care and any other proper method ताकि जो पूरी साइकिल है ट्रेनिंग, लैंडिंग, हैंड होल्डिंग की वो केयरफुली और सिस्टमैटिकली तरीके से की जा सके. Now the other article that is export potential of the rural industries. So रूरल इंडस्ट्री की बात करें एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारे इंडियन इकोनॉमी में. रूरल इंडस्ट्रीज आर locally available resources, locally manpowered and locally rural supported technology के थ्रू काम करती है. Now, rural industries mainly consist of agro-based industries, forest-based industries, khadi village industries और mineral-based industries. ये कुछ important industries हैं जो कि rural industries के setup पे काम करती हैं. Now, contributions की अगर बात करें rural industries की, the rural industry may not create employment opportunity, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं करती, बट ऑल्सो इनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज, बिकॉज जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो एक्सटेंडेड एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंसेस की बात की हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. दिस इंक्लूड द कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज,
हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्योर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हर एक इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। Now, the export potential of rural industry need to be harnessed and contribute to the foreign exchange earning and also help to correct the deficit of the balance of payment. जो BOP की बात है वो भी यहाँ से पूरी की जा सकती है once we establish industries and ensure that more and more participations are there. तो बात करते हैं पहले खादी और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की। द मेन आइटम एक्सपोर्टेड, जो ऐसी आइटम जो एक्सपोर्ट होती है, इज रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल बेस्ड चक्रा, सिल्क, मसलिन टू यूएस, जापान, यूके, कनाडा, मिडिल ईस्ट नेशंस में बहुत ज़्यादा डिमांड है। Handicraft constitute an important segment of the decentralized and unorganized sector in Indian economy, and presently the handicraft sector is contributing substantially toward employment generation and export. उसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, द हैंडलूम सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, राइट, एंड इट हैज integral part in the rural and semi-rural livelihoods. The sector has advanced, which being less capital intensive, eco-friendly, flexible of small production, openness to innovation, adaptability, even the requirement minimum use power, and has a great export potential. तो मिनिमल यूजेस में ये एक ऐसी सेक्टर्स हैं जिसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है। The Handloom Export Promotional Council of India participate in various international fairs, and the members of the Handloom Export sells their handloom product to the international market also, right? तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छी कर रही हैं एक्सपोर्ट। उसके अलावा पीएम मित्रा की अगर बात करें, द प्राइम मिनिस्टर टेक्सटाइल वाज लॉन्च्ड। बेसिकली पीएम मित्रा स्टैंड फॉर द पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ये स्कीम अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी टू स्ट्रेंथन द इंडियन textile industries by way of enabling operations, reducing logistic cost by housing the entire value chain at one locations, ताकि खास करके जो logistic cost है उसको कम किया जा सके. It should attract more investment, generate employment opportunities and augment the export potentials. Now the scheme will develop with an integrated large scale modern industries जहाँ पे infrastructure facility को develop किया गया for total value chain. Textile industries example की अगर बात करें, spinning, weaving, processing, garmenting, textile manufacturing, processing और printing units इसके अंदर आते हैं, right? I think most of you must be aware of this program and policies. If you have read government schemes, आपको इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा. The scheme emphasized leveraging triple B model, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उन पे काम करती है, वैसा फास्ट प्रैक्टिस्ड इम्प्लीमेंटेशन इन टाइम बाउंड मैनर. क्योर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, दिस इज अगेन एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दैट हैज अ पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट. कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास काफ़ी पोटेंशियल है इसको लेकर के, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. दे हैव द लार्जेस्ट पोटेंशियल कोकोनट इंक्लूडिंग द क्योर. And this industries employ almost 75% of the women and produce a wide range of cure products. Now the immense opportunity to this industries need to be leveraged, जहाँ पे benefit मिल सके. तो ये ज़रूरी है कि इनके रोल और इम्पोर्टेंस को रूरल सेटिंग्स में समझा जा सके, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल है. एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द रूरल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, द रूरल एरियाज स्पेसिफिकली अगर रोल की बात करें, द सिग्निफिकेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड द इकोनॉमिक प्रोसेस इज नोन एज the export-led growth hypothesis, right? And this entails the promotions of export at the global economy, acquiring the foreign exchange reserve, helping in improving the high-tech technology and services with greater multiplier effect. Now, in addition, it provide a big push to the skilled laborers and use the advanced technology, right? Now, linking the product with this sector and the export market is the best way to stimulate, जहाँ पे रूरल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा. ऑल्सो इट विल फैसिलिटेट द कनेक्शन विद द एग्री मार्केट्स एंड ओपन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ. बात करें रूरल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक्स की. सो दिस इज समथिंग विच इज अगेन गोइंग टू हेल्प इन जनरल स्टडीज पेपर 3. अगर जीएस पेपर 3 की बात करें, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है. नाउ द गवर्नमेंट एंडेवर टू रिसर्च द इकोनॉमी विथ 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. गवर्नमेंट ने कहा है कि 4 E's पे वो काम करेंगे. द फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड इज एनेबलिंग एनवायरनमेंट, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इज एक्सपोर्ट. तो इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें, आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दैट हैज एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल. तो आप ये ध्यान रखें, एमएसएमई सेक्टर
सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है. As the estimate the government survey has released in 2017, it indicates that 11.13 crore people were employed in the non-agriculture unique operated enterprises, which is 45% rare in the rural areas, right? The government ने emergency credit line guarantee scheme भी start की, which is now expanded to the guarantee of cover of 5 lakh crore rupees that was launched in 2020. Now, infrastructure sectors में अगर बात करें, the introductions of production link incentive scheme, जिसको PLI schemes भी कहते हैं, has aimed to help the scale up of industries, emphasizing on the physical and digital infrastructure that has been concentrate steps ensuring the momentum of economy recovery. जिस तरह से कोविड-19 के बाद रिकवरी हो रही है, उसमें PLI स्कीम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम रोल अदा किया. द पीएम गति शक्ति अप्रोच हैज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस की गई हैं. 7 इंजन्स बताए गए हैं, विच इंक्लूड द रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, ports, mass transport, water, logistic infrastructure that was fueled by the transmissions, IT communications, bulk water, sewerage, social infrastructure and clean energy. Right? तो ये कुछ efforts हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर की हैं, and also the private sector have come into play and they have also made a substantial contributions. Employment की अगर बात करें, total workforce in the country is estimated to be around 47%, with 81% in the unorganized sector. There's no denying that the pandemic and the lockdown has several repercussions in the economic activities and huge adverse impact on our employment also. Now the government has taken some important measures like Udyam registration portals for e-Shram, National Career Services, Atmanirbhar Skill Employment Mapping, and more so because the two cornerstone of the Udyam and ITR is GST and database. Export में all indicators of the economy is returning to the growth trajectory after an expanding of the export level, with global demand being restored from 2021-2022. अभी 113% तक की जो एक्सपोर्ट है वो नोटिस की गई थी कंपेरेटिवली 2019-20 की. Now the main drivers of the growth export is the engineering goods, petroleum products and the electronic goods. और भी कुछ आइटम है, बट ये मेजरली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ग्रोथ एक्सपोर्ट देखी गई. Now, a roadmap of the rural industrializations. Rural industrialization means encouraging the location of the large and small unit by the way of urban area and planning safety units from the urban areas to the rural areas. Right? तो rural industrialization एक बहुत important aspects है, खास करके पूरे एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंडस्ट्रीज के सेटअप को प्रमोट करने के लिए. The COVID-19 induced pandemic has thrown several socio-economic challenges, and most critical being is how to revive the economy. अगर बात करें इंडिया की, it's estimated that 497 million workers, which is about 94% of the total unorganized sectors. And rural industry is an important not only for contribution to the GDP, but also has as a stellar performance in the export. Advantages की अगर बात करें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज रिक्वायर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे काम करती है. रूरल इंडस्ट्रीज कैन टेक मोर एडवांटेजेस ऑफ द लोकल रिसोर्सेज एंड ट्रांसलोकेशन कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड बाय केटरिंग द लोकल डिमांड, राइट. और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दिस इज इनएविटेबल, दिस हैज टू बी देयर वंस एन इंडस्ट्री सेटअप इन द लोकेशन. अब कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इसी कंसर्न में किस तरह से इंडस्ट्रीज को प्रमोट की जाए. So first is the scheme of fund for the registration of trade industries. तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन 2005, जहाँ पे एम की गई थी टू इंश्योर दैट वेरियस ट्रेडिशनल क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक बैम्बू, हनी, खादी will spread throughout the country in the rural area. So this was the main motive and aim. और कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें स्कीम की, is to provide economically sustained employment to the industries workers, local business head and rural artisans. Now it targeted the advance in enhancing the market value at advancing value of the product provided by the local clusters. Now दूसरी स्कीम है स्कीम for the promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. So this is another initiative to set up the incubation center, right, and network of technology for enhancing the entrepreneurship across the countries. तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें एस्पायर्स की, पहली है दैट इज टू क्रिएट जॉब एंड रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, प्रमोशंस ऑफ
entrepreneurial and cultures in India, facilitate करना innovative business solutions को और meeting for the social need of the people, and promotions of further strengthening the competitiveness in the micro, small and medium sectors. उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी बाय मर्जिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम, नेमली द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों को मर्ज करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाई गई, विच एस्टैब्लिश फॉर द माइक्रो इंटरप्राइजेस बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये आप ध्यान रखिए, अर्बन और रूरल दोनों एरियाज के लिए। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द KVIC, that is the Khadi Village Industries Commissions at the national level और through bank, district level पे DICs हैं, district industries centers, उसके और state में state KVIC के directorates हैं जो इन पे काम कर रही है, right? And there is also the state Khadi Village Industries Board at the state level. So there's a proper hierarchy, there's a bottom-up approach through which this program is being implemented. Now, Pradhan Mantri Mudra Yojana, this is again a development and refinery agency is Mudra, provide re-refining loan support to bank and MFI, that is the microfinancial institutions, for lending the units to have a loan requirement up to 10 lakh rupees. फिर गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्टार्ट की। दिस इज द रिवाइविंग रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट फैसिलिटेट द क्रेडिट टू MSME यूनिट थ्रू collateral free loan facilities and enable the eligible lending institutions to new existing micro, small enterprises. And the scheme provide collateral free loan up to 200 lakhs for individual for the MSME and guaranteed fee to the bank by them. So this is how these schemes are operated. Now, agribusiness or rural industries की अगर बात करें, so agriculture play a significant role in securing the food, livelihood and development option in India. Though agriculture and elite sector contribute around 20.2% in the percentage and a gross share value of agriculture in the elite sector. Agriculture sector provide 41.9% of the total employment. This factual data is relevant for me. आप इस तरह के points जरूर ध्यान रखें। Post pandemic the situation has changed due to the reverse migration और rural areas में कुछ ऐसे people say they are expecting to be the part of the agriculture sector and the substantial contribution in the rural areas only. Now, looking into the concept of agribusiness, किस तरह से concept start हुई? So the term agribusiness was first appeared in the book by Davis and Goldberg in a seminal book titled A Concept of Agribusiness. Agribusiness refer करती है agriculture और elite businesses को, which include manufacturing, distribution, storage, processing, marketing, transportation and distribution of the like products. ये इनकम्पास करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स, एंड दस इट कैन बी ग्रुप्ड एज 3 कैटेगरीज और 3 एग्रीगेटर्स। पहले है फार्म सप्लाई, दूसरी है फार्म प्रोडक्शन एंड थर्ड इज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इट लीड्स टू इंक्रीज द एफिकेसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म सेक्टर इन आवर कंट्री। Now, sectors of agribusiness की अगर बात करें, the sector of agribusiness has been categorized into input sector. We'll see and understand the detail of each and every sector. तो पहली sector है input sector, उसके अलावा है production sector. This is the production sector, processing and value additional, marketing, sales and the support sectors. So बात करें input sectors की, input sector of the agribusiness industries deal with the provisions of input to make agriculture production safe, secure and profitable. और agriculture में input sector is either biological or chemical inorganic compound that used in the productions of agriculture and allied products. The range of inputs products include biocontrol agents, animal and poultry products that feed the productions of this agriculture input and create the agribusiness opportunities. तो काफी important और relevant sectors हैं। The production sectors की अगर बात करें, production sector of agribusiness mainly deals with the productions of the crop, rearing of the animal for consumptions, right? Serving the raw material to produce the secondary products. The production sector and the input available sectors got invested in producing safe, secure and profitable output. Processing and value additions. The processing sectors deal with redefining the transformations of the agriculture product available to the production sector and suitable for technology and value addition product which facilitate ease of consumption and end of consumers. The agro and food processing industries in India
has utmost significance in terms of employment and income generation poverty elevations program for the foreign exchange earning. Now, market and sales की अगर बात करें, the sector of agribusiness contribute not only to the agriculture but also available to those who need them, and also sell agriculture inputs like seeds, fertilizers, and those in the production sector of agribusinesses. This marketing sector also has a agribusiness consists of wholesalers, retail companies, trade agricultures जहाँ पे input और output दोनों involved होते हैं. Now, the support sector, this is something again an important sector of the agribusiness which provides support to the sector from farm to human capital development, चाहे वो knowledge development की बात हो, training, providing support, financial support, sensitization of individual in the agro-based industries. And this sector support consists of organizations and the firm that provide technical know-how for advancing farming, providing educations, agribusiness worker, provide loan, insurance, and aid other financial assistance to agribusiness firm, as well as provide moral supports to the company in the agribusiness industries. अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें, एग्री स्टार्टअप्स हैं जो यूनियन बजट में ले डाउन की गई थी, जहाँ पे एग्री स्टार्टअप पे खासा फोकस रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से. इन दिस इनिशिएटिव नाबार्ड विल बी सपोर्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस. दूसरी है इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे यूनियन बजट ने गवर्नमेंट ने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर, एग्री लॉजिस्टिक, एग्री सर्विसेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज फॉर द फार्म सेक्टर एक्टिविटीज इज एक्सपेक्टेड टू मल्टीप्लाई with the logistic use by transportation of agriculture products, reducing the problem of the supply chain and more liberalized approach. और ग्लोबल कोलैबोरेशंस पे अगर बात करें, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $100 million की लोन की है टू प्रमोट एग्री बिजनेस एंड अ नेटवर्क टू बूस्ट द फार्म इनकम एंड रिड्यूस द फार्म लॉसेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इन February 2022 एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की गई बिटवीन India and Singapore, which is expected to have a huge impetus in the agribusinesses area. So ये कुछ important government initiatives हैं to promote the agrobusiness industries in our country. So this was all about for the Kurukshetra for this month. We have a lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis, which I covered from the Hindu and Indian Express. IS Gazetted की magazine है, FCA, PIB compilation is there. MPR, which is again very important gist of Yojana and Kurukshetra and all other initiative. These all initiative will help you to sail through the journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.